You had a good discussion about enemy company. That was the case law. Yeah, that was the case law. He was in industry, no? Then he got into the job. Nice. He was a practicing advocate. Okay, so now he and just completed his PhD. So you can't go live on the same link. Same link? Separately? तो share separately. That is what he is doing. वो ना allow नहीं करता है इतने घंटे तक. Good afternoon. Good afternoon. Great. Thank you so much. So, are we live? Yes, we are live. Great. And I'm sure people will start joining in as the links get circulated. So, yeah. Okay. So now, very interesting part. As Sandeep ji mentioned about IPO listing criterias. तो बहुत बार ये होता है कि करने से क्या होगा? People don't visualize their future, when they're actually doing it. And it is said that we always value ourselves in a long term, and we estimate ourselves in the short term. So the long term game of going IPO, how does it change? What changes once the IPO is done? It's a complete transformation with which the business goes through, the team goes through, the management goes through, and most importantly the promoters go through. And we would listen to the success story of Raipur, and that's where I call Ashok ji and Deepak to share their experience of taking Manorama to the IPO and how the story has changed post that. So let me first introduce Ashok ji and Deepak for all of us. Ashok ji is the whole-time director and the CFO of the company, and he has been associated with Manorama for more than 15 years now. So he's completely seen the transformation with which the company has gone through. And Deepak is the company secretary and the compliance officer for the company. And as Sandeep ji mentioned, that when the companies are going through IPO, the biggest challenge for the organizations is transparency, disclosure, compliance, and how these things have helped them. We would like to listen from you. So over to you, Ashok ji and Deepak. But before that, we would like to felicitate you, and on behalf of Mentamai board and ITM, I would like to felicitate you. Yeah, I mean, we were supposed to have Deep Saraf, who is the the deputy CEO of the company and from the promoter family, but he had some emergency, he couldn't come. But these two
gentlemen are here who are going to tell us about Manorama, their journey, their experience. So yeah. Sir, because we made it for this. हाँ जी, हम आपके भी पहुंचा देंगे. Lakshmi is also come. Sir, give me, हाँ जी, I will give it to you. Right. So yeah, over to both of you. So Is there a video which is going to be run? If you can just help. Yeah. Good afternoon, everyone. And just we will brief about how we do the business, what is the sourcing of raw material, how we convert into value-added products, and to supply global market for the chocolate, confectionery, and food industries. This is just 5-minute video. Then we can take the Q&A. So please. So we are the global player for making cocoa butter equivalent specialty fats and butter out of very exotic seeds. This is the raw material like sal, shea, mango. So the promoter have more than 5 decades of experience in this business. So we incorporated our company in 2005, and we did the IPO in October 2018 on SME BSC SME platform. In 2021, we migrated to Manboard. At the time of IPO, our valuation is around 209 crore, and as on date, our valuation is around 9,000 crore. Currently, till December, we have booked more than 900 crore turnover, and we have announced on stock exchanges on quarterly basis. And we have guided for current financial year FY26 the top line more than 1,300 crore. So we are available in the food, in the chocolate confectionery and cosmetic industry. This factory we have built up in 2018 with the raise of IPO 64 crore rupees. Then we did the preferential in 2021 for 100 crore rupees. So this is total factory. We are around 25-acre land size, and we have backward to forward integration. All the facility we have here. So factory to Birkoni Mahasaman. So this is our in-house DSIR certified lab. So this is a real view of the plant from first step to like final step, packing and dispatching. So we procure the raw material from Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand, part of Madhya Pradesh, Nepal, and around 18,000 collection centers we operate during the procurement season. So hardly 20, within 20 days we procured our whole raw material whole year. Only 20 days. So the raw material is seasonal, sir. When the season comes, the raw material comes, and we need to procure in like 1 month span of time for the full year. You can see here we are the very sustainable supply chain.
of our raw material. So the motto is that we should have self-sustainable sourcing of raw material, either terms of raw material or customer base. We have to self-sustainable model. So we are catering all these states to cater this raw material. So this is our product portfolio. We have mango butter, sal butter, sia butter, kokum, pulwara, mohra, dopa. So in this sia we import from West African countries, and other than sia, sal, mango, and others are Indian forest-based seeds. So in the season, when the season comes, this flower come which have seeds. So after self-extracting, the tribal people collect from the forest. So like this tribal people collect from the forest. So directly or indirectly, company generating a huge employment. So like this, during season we operate our correction centers. So here we purchase from the tribal peoples, and we dispatch to our warehouses and then to factory. The same collection network we have established in West Africa also. In West Africa, currently we have 7 wholly owned subsidiary companies in 6 countries, one in UAE and one in Brazil also, to cater the local market. So this is the savanna belt in West Africa, which have Ghana, Togo, Benin, Nigeria. So from here we import our sea nuts. So, so we collect the seeds like sal mango in the month of May, June. Shea we import from West Africa in the month of November, December. So every seeds has a different seasonable periods. So from we have the sustainable sourcing model from tree to our factory. So this is a very robust system we have developed for the all ecosystem to this raw material sourcing. What is the technology you use to monitor the entire seed collection from different centers? So we do the traceability system we have. So accordingly, we store the raw material and batch wise we process the material. So we make the traceability system to from seed to till end product. Well, also we have a direct controlling and monitoring team. So they visit in the forest, in the collection centers continuously during season, and even after season also, to study the availability of raw material. So this is the automated plan run through SCADA system.
So you can see our geographical footprint. So we are procuring the nuts from the West Africa and we bring to India and make the value-added products and supply to all around more than 60 countries in the world market for the specialty fats, butter and cocoa butter ingredients. All giant customers like Mondelez, Nestle, Hershey, Mars, all top giants in chocolate industry and cosmetic industries are our customers. How do you store the butter in the refrigeration? So we have more than 10,000 ton of capacity of storing butter in tank form. So we use the SS tank and the tanks which we have stored the butter in different specifications. And when you transport, how do you transport? We don't transport the butter. We bring the raw material as a seed form. We extract the butter, make the value-added products because this all butter will be solid form after the extraction of butter. Like you have know the ghee, how ghee works, same we have the butters. So we keep into tank form, then we have pack into cartons, and as per the customer requirement, sometimes pack in drums and send to the customers. Who do you supply in India? So India, we are virtually monopoly for this sal and mango, and Shia worldwide only two manufacturers others. Whom are you supplying? So we are supplying to Mondelez, Nestle, Hershey, Mars. You know the Cadbury chocolate. Confectionery industry, right? Major So, confectionery. like five-star chocolate, they are using our fats into their product. Kinder Joy, Even though Kit Kat, on the free. all chocolate industry, sir. So our Their customers are global rather than Indian. so our major like more than 50% turnover is from export. So these are our few key certifications to compete in a global market, and our business motto is waste to wealth, from forest to premium brand and poorest to richest. So waste to wealth means the raw material is a very waste product. So there is no use of this raw material other than this. So we convert into waste into wealth, bring to very forex reserve for government of India into ecosystem of India. Second thing, this is the all forest products. So we don't cut any trees, don't harvesting anything. Just it's a natural fall down from the tree and the tribals collect and send to the we make the butters and supply to these all chocolate industries. And the last is very important from poorest to richest. So we are collecting the seeds of the very poorest of the world, like these tribals communities and we selling to all these richest in the world to these chocolate industries. So this is the motor of our business, and we are contributing to nation and tribal communities to upliftment of their livelihood. These are the products where our product is gone for application products. So our product is using for the bakery fats, cocoa butter fats, then ice cream coating also we are supplying to many industries. So there is a different application of these fats and butters. So as per the customer requirement, we make the butters and supply to them. It's a co-developed butter. We have standard products also, but we develop as per the specification of the customer. For so there are some specific products.
have few questions for both of you. Uh, what really triggered the thought to go for IPO by the promoters, and how do you see the shift post IPO? The funds what you raised has given the boost. So if you can talk about that. Before IPO, we are very small capacity, only for 4,000 ton annual basis, and the requirement of the product is increasing gradually. So promoter thought that why should not develop the business in such a way that it should be self-sustainable, and it should be the demand is a huge of this product. So we thought that we should start immediately to cater this capex, build the capex, and for this we have two options: either we should go for debt or for the equity. So at that time, valuation was very less as per our thought process that valuation is very less. We bring this business, difficult business, not easy business. But anyway, we thought that if we go to the IPO and raise the fund, so we had to create the value for the stakeholders. And the promoters' vision was very clear that they can build a business triple, four times, five times of what they have at that time. So vision was very clear, and promoter are very fond to that. If we create the value for the stakeholders, why should not go for the IPO? So after the IPO, our system was very transparent, and we are very accountable for all the stakeholders who invested in our company. At that time, very small company, and we are very corporate governance after this. And you can see the after this IPO, we create the value for all the stakeholders. So valuations makes promoter more. Can say more to found to work. Jitna valuation बढ़ेगा, they want to more work. So creates value for the company and the stakeholders. Great. So Deepak, my question to you is, what shift you saw in the corporate governance, and how do you think corporate governance has helped the organization to move forward, and something which you saw the shift, the culture, the board culture. If you can talk something on that. See, some people think good corporate governance means only compliance. But good corporate governance means, as per my understanding, it is transparency, accountability, ethical, business, fairness, and compliance. So the promoter, when decided that we are going for like listing, then before going for listing, the company should have good corporate governance in system in place. So we have in our company. So when go for a listing, of course, listing will help you to get fair market value for the company. See, books give you the book value, but when you go for a listing, you will get the fair market value and good corporate governance, because you have to disclose information in a timely manner. If regulation is saying you have to upload outcome within 30 minutes, then you have to upload, otherwise the penalty will come. So definitely, well, it improves very much like corporate governance. Perfect. Thank you. Thank you so much. Any other questions, please? Yeah. Very One minute. interestingly, your logo resembles Reliance logo. No, not in true sense, but It resembles more of a Reliance logo. Yes, sir, but from the very starting, we have this logo. No, I saw the M, which is leaf and all of that. But Reliance also has the same similar, except that there is one spike coming from that. It's just casual observation. Yes. I had a question. You said governance is not only compliance, but I think in your industry you have these 20 compliances and certifications that you have to manage. How do you ensure that all of that is met? Because you're a global organization, and to meet those, how do you handle that? So we have very good team in a company. We have like quality department, separate department. They are like very closely working on each and every, and like monitoring on like renewal time and contacting with the agencies. So definitely we have system in place. So that's why we are like very easily managing all the So you use certification technology. compliances. You use technology. Of course, in this digital time, in today's digital time, it is very important to use technology. Right. So we have all our SOPs also for every certifications. Okay. So
follow all SOPs, and every team member he has to follow the SOP. As Sridhar sir also said today that the people of the any organization is a very important. Exactly. So we have to manage the people. We have learned to the people. Then company can grow up. Yes. So this is very important to organize anything. People should be run the system, and system automatically will deliver the result. So we are working on this method, and definitely, sir, we are studying everything, and we are trying to learn everything that how we can learn more and how we can go for improving our system. So this is the motto of promoters and the all team members, management team, working on behind this. Also, we provide like trainings to our new joiners and to all the team on updates time to time. So the responsibilities are assigned to like HR team, admin team, and other teams to arrange trainings time to time. So that's what we have implemented good system. That's why company is fastly growing. So last year turnover was 771 crore. This year we already guided on stock exchanges for FY 26. That's why I'm sharing with you more than 1300 crore. Previous year it was 461 crore something. Right, sir? So company is fast growing. Thank you. Thank you very much for a wonderful presentation, and a big round of applause to both of them. Thank you. Thank you so much. Okay, so let's move to our second last, master class today, and we have with us Mr. Soumya Padi. He is the managing director of Indorient Financial Services, and let me introduce, Soumya to all of us. Mr. Soumya is Managing Director of Indorient, and since 2018 August, Indorient is a SEBI registered Category 1 merchant banker. Sorry. Indorient has till date completed 14 IPOs as a lead merchant banker and has worked for more than 2 decades. Soumya has worked for more than 2 decades in the organizations like NSE, BSE, MCX, SEBI also. He has also worked with ICICI, Yes Bank, primarily on capital market areas. He's a chartered accountant by profession, postgraduate from IIM Calcutta, and I think the way I have seen him is a passionate entrepreneur who makes sure that he doesn't only talk about the IPO capital markets, but understand the human part of the promoters, and connecting that story with the promoter makes him so humble. So, sir, thank you so much for being here, and we really appreciate your presence here, especially coming in from Mumbai for this session here. Makes a lot of support to us, and I'm sure Raipur has a great potential, and that's where I think we collectively have to put in a lot of efforts to bring in a lot of talented companies from here to take them to the listing on the BSE. Yeah, thank you so much. And over to you, sir, please. And a big round of applause.
Well, good afternoon, Dr. Murthy, Vidya, Sridhar, my colleague from BSc, promoters, professors on a Sunday. Yes. Thank you so much for being here. Sometimes people find this kind of lectures very boring. Uh, but yes, we will talk about money. Little bit about us. Anyway, Divya has already introduced. Nothing much to talk about. But yes, this is what we do. It's been 8 years now, 8 years running. 2018 onwards is when I started this journey. 2019 is when we got license, and as she said, we have already done 14 IPOs. We have done some large private equity deals also. We have done some advisory deals on the NCLT side for M&A. And as I speak, we have filed 4 transactions on SME, 1 on main board in March, and 6 more are in pipeline. This is anyway what we spoke about. Okay. This is why again we do everything, because in a life cycle of a company, you get to see a different kind of requirements. Some are small, some are large. So we do have a small startup funding setup also. We do have the SME setup for the SME companies. I do large main board IPOs. We do private equities for companies which are not ready for IPO. And of course, companies which are kind of gone into becoming MPA and have gone into NCLT, we also do that side of the advisory. Recently, we have started the advisory for arranging corporate bonds and municipal bonds. We have raised 1,500 crores for Tata Renewables for a 15-year tenure very recently. So we are slowly getting into the fixed income side, which is a very, very limited participation area, and it's a very niche area. Now, if you see here, the M&A is one area which is coming up very heavily, because a lot of companies today are suffering from the problem of succession. Uh, the first generation promoters have built the company to a size, the next generations have already left the country. They don't want to come back to dirty their hands and run the business. So when the promoters reach that 55, 60 years kind of age, they start thinking, what do I do next? The kids are not going to come back, so what do I do? I as well sell the company, get a bulk amount of money. So India as a country, we are getting a lot of opportunity on M&A side today. This would be good news for you, Sridhar and Divya both, because it does not consume a lot of time, because that sitting with them and kind of bringing onto the table the actual buyers and getting the marriage done is a patience area which we don't have. We have very short kind of time frame, which you look at 9 months to 12 months is the time frame I look at for every transaction. Anything beyond that, we are impatient, we let it go. So you will have a lot of work on that side. That is the service we can actually diligently give to this kind of senior promoters who are looking for exit. So these are the areas where we have done work. This is my team. Most of them are from corporate side. In fact, the second one, who is the joint MD, used to be the Asia Pacific head for Morgan Stanley. Then you have the head of private equity. He comes from Nomura. And the second is that is SVP ECM. He comes from Morgan Stanley, again used to be the financial controller there. So primarily the entire team is from institutions. These are the transactions, as you can see, which we have already executed, as she said. E-Mudra is something you would be very familiar with, because you will be using digital signatures. So we listed that in 2022. We raised 400 plus crores with the merchant bankers. Now, these are something which are in pipeline, as I mentioned, ranging from 50, 60 crores to up to 16. I think largest one will be 1,500 crores. I don't know whether that is mentioned. Yeah, that is mentioned there. That company manufactures the fabric which is used in tires and in conveyor belts. So they're a technical textile company. In India, only 2 companies majorly manufacture. One is SRF,
Other one is this. So we ourselves call more focused on the food, more focused on the manufacturing. Having said that, I might be one of those bankers on the SME side who has already listed 3 service companies, including the first HR company in the country to get listed, which is a headhunter company called EMA Partners. It's a British company. And typically, if you look at companies like manpower companies like Questcurve or Team Lease, their margins are around 3%, 4%. These companies have a starting margin of 25% and upwards. They are headhunters. They hire CXOs and CEOs with a salary level of a crore plus. That's the kind of companies these are. These are the funds which we interact with. You can see the mutual funds. So we again take pride saying that I might be the very few bankers in the street where mutual funds have invested into SME companies, which normally doesn't happen. Like you need size, you need credibility and profitability, everything else. 2 of my companies, mutual funds have invested. That is the credibility I take pride in. This is the growth. This you can all get the details and the thing. This is a company, again, service company. You would be dealing with a lot of hotel companies. They lease hotels rather. They don't own any hotels. As of now, they are managing 1,800 keys and fairly profitable. And down south, alone in Bangalore, they have got 14 hotels. So they are again a growing SME company which is going places now. Now this is the outstanding company. They are the largest manufacturer in India to manufacture bushings of transformer. You see these things which is coming out of the transformers. They are called bushings. Ceramic bushings. And then there are bushings which goes into the transformer, which is paper and resin and all that. So if you leave out the ABB, Schneider of the world who manufacture for their captive consumption, this is the largest manufacturer in the country. Listed price 24 December 146. Today it's at 700 rupees. 2,200 plus crores of market capitalization. So here also there is a mutual fund which is sitting, and they have already opened a subsidiary in Europe. They have done a JV with Quality Power. So that's how the SME companies are taking this right. So SME per se doesn't mean that SME. Now, what is the right time to hit the market is a huge question mark. So numbers are something for to see, nothing more than to talk about. अभी ये साल थोड़ा सा ठंडा है. Hopefully by second half things will pick up. What we do end to end, as somebody did ask what you do, we do end to end hand holding for an IPO. Right? You decide that you are going to go for IPO, then my work starts. Till that point of time, I have no role to play. Unless until we principally decide to do an IPO, मैं आके समझा नहीं सकता कि आपको IPO करना है. आपको डिसाइड करना है एज ए प्रमोटर कि हाँ मुझे IPO करना है, मुझे पैसे रेज करने हैं और किस पर्पस के लिए रेज करना है. वो हो गया, then after that it's all my work. Team stays in. I think somebody wanted to see what are the stages of an IPO. So first is the preparation of documents, whatever is needed for the draft, hearing, prospectus. इसमें मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट इट्स ए 500 पेज डॉक्यूमेंट जो जाता है एक्सचेंज. एसएमई साइड की बात कर रहा हूं मैं. या तो एनएससी में जाएगा या तो बीएससी में जाएगा. नाउ दैट बीएससी इज देयर, वो मुझे गाली देगा कि एनएससी का नाम क्यों ले रहे हैं. सो बीएससी में जो फाइल होता है पेपर, पूरा डॉक्यूमेंट फाइल होता है. एंड उसके बाद देयर इज ए रूल दैट आपको 21 डेज का नोटिस देना होता है पब्लिक को फॉर एनी कमेंट. कोई भी कुछ भी कमेंट कर सकता है ऑन दैट पेपर फॉर 21 डेज के. उसके बाद एक्सचेंज का अपना क्वेरी चालू होता है एंड दे गिव द अप्रूवल फॉर लिस्टिंग. लिस्टिंग से पहले इफ एनी क्वेरीज हैव कम इन, एनी चेंजेस कुछ हुआ रहेगा नंबर्स पे, फाइनेंशियल पे चेंज हुआ रहेगा, या तो द अमाउंट ऑफ मनी आप जो रेज करना चाहते हो वो चेंज हुआ होगा, देन वी हैव टू रिवाइज द आरएचपी एंड वापस वो डॉक्यूमेंट फाइल होता है. दैट इज कॉल्ड आरएचपी. आरएचपी एक बार फाइल हो गया, दैट मीन्स यू आर रेडी टू गो फॉर द आईपीओ.
आप वापस नहीं जा सकते। ये आपका फाइनल स्टेज। जब तक आपने आरएचपी फाइल नहीं किया तब तक आप होल्ड से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अप्रूवल आने के बाद भी साल भर के लिए आपके हाथ में टाइम है। वैलिडिटी साथ जो अभी बात कर रहा था संदीप, 6 महीने का एक्सटेंशन हुआ है, सेबी ने एक्सटेंशन दिया है। काफी अप्रूवल 31 मार्च को एक्सपायर हो रहा था, मार्केट कंडीशन के चलते सबने रिक्वेस्ट किया कि गिव अस एक्सटेंशन ऑफ 6 मंथ्स, तो सितंबर तक सेबी ने एक्सटेंशन दिया है। एक बार वो फाइल हो गया, देन यू हैव टू डू द आईपीओ। उसके बाद सब इशू क्लोज होने के बाद, सब नंबर लेने के बाद जो फाइनल डॉक्यूमेंट फाइल होता है, दैट इज प्रोस्पेक्टस, दैट इज फॉर पब्लिक कंजम्पशन। प्लानिंग स्टेज में क्या क्या होता है, इफ यू कैन डू ए सिंपल रीडिंग, Divya will also be able to kind of contribute on this. It is a pre-planning and post-planning दोनों चलता है कि आपका जो practices है वो बुक क्लीनिंग से चालू होता है, सेक्रेटरियल क्लीनिंग होता है, फाइनेंशियल क्लीनिंग होता है। काफी अच्छा, मैं किसी को बोल भी रहा था कि अपना यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि टैक्स बचाओ। अब टैक्स बचाने के चक्कर में होता है कि हम प्रॉफिट कम दिखाते हैं। प्रॉफिट कम दिखाएंगे तो हमारे जैसे आदमी आके खड़ा होता है, भाई साहब आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो वैल्यूएशन कहाँ से आएगा? तो हम एक ही टेबल के दोनों तरफ बैठते हैं। फिर तो वो बोलते हैं हमको वैल्यूएशन चाहिए, हम बोलते हैं आप प्रॉफिट दिखाओ। बोलते हैं प्रॉफिट दिखाएंगे तो हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, उसका भरेगा कौन? तो ये हमेशा ये आपका आमने सामने का बात होता है। बट एज ए लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ प्लानिंग, व्हाट दिव्या मेंशन, शॉर्ट टर्म पे देखेंगे तो ये नहीं होने वाला। अगर मनोरमा ने लिस्टिंग नहीं किया होता, शॉर्ट टर्म देख लिया, उन्होंने टैक्स ही बचाया होता, आज के दिन में यहाँ नहीं पहुंचते। 160 करोड़ उन्होंने जो रेज किया, 170 करोड़, उसका मल्टीपल आज के दिन में दिख रहा है। 1300 करोड़ के लेवल पे पहुंचे, उसी का मल्टीपल है कि आपने पैसा उठाया, उसका ढंग का यूज किया, एंड वैल्यू अपने आप मार्केट देता है। 200 करोड़ का मार्केट कैप पे उन्होंने चालू किया था, 9000 करोड़ का वैल्यूएशन है आज के दिन में, 45 टाइम्स। कौन सा इन्वेस्टमेंट देगा आपको? एज ए शेयर होल्डर आपने एक भी शेयर लिया होगा था, आपको 45,000 आज भी मिलता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं देगा इतना वैल्यू। सो आइडिया ये है कि आप बुक क्लीन करो, डॉक्यूमेंट क्लीन करो, compliance. I think the company secretary was talking about compliance and corporate governance both. Compliance documentation का होता है, rules and regulation का होता है, corporate governance practices का होता है। आप कौन सा practice use करते हो, which is in turn or in tune with the compliance, that is corporate governance. And corporate governance एक single document का नहीं होता है, एक single quarter का नहीं होता है, एक single year का नहीं होता है। Corporate governance continuous होता है, day in day out होता है। Every practice is part of corporate governance. छोटा चीज नहीं है, ये बड़ा चीज है। Compliance is a small part of corporate governance. Corporate governance is the way you talk to the customer, the way you present the details to the customer, the way you file the details with the bank. आप क्लाइंट से कैसे डील करते हैं, आप अपना क्या बोलते हैं, what Sridhar mentioned about your employees से कैसे डील करते हैं, everything is corporate governance. It is about ethics, it is about practices, everything comes under corporate governance. ये सब जो चीजें आप यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब अवेलेबल है पब्लिक में, ऐसा कुछ नया चीजें मैं बोल नहीं रहा हूँ। बट एज ए मर्चेंट बैंकर हम दो ही चीजें देखते हैं, बंदा कैसा है, अच्छा है, दमदार है, चला लेगा, ये पहला वेरिफिकेशन। दूसरा, धंधा कैसा है, धंधा कॉम्पिटिटिव है, ग्रो करेगा, 5 साल सस्टेन करेगा, एंट्री टू बैरियर कोई है, दूसरा कोई आके खा नहीं जाएगा। हम स्टॉक की बात कर रहे थे सर सुबह, कल को मेरे पास 50 करोड़ होता, मैं उसको खा भी जाऊंगा, मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेगा, डकार भी नहीं लूंगा। दैट इज द सिचुएशन टुडे, एवरीबॉडी हैज मनी। सो हम धंधा भी देखते हैं और बंदा भी देखते हैं, क्योंकि जो मैं प्रेजेंट करता हूं, मैं मेरा इन्वेस्टर का व्यू प्रेजेंट करता हूं, मुझे दोनों बराबर चाहिए। और मैं एक सिंगल काम के लिए काम नहीं करता, ट्रांजैक्शनल नहीं है, हम लाइफ साइकिल बैंक करें। एक डील अगर मैंने खराब कर दिया, अगले डील के लिए मेरे पास इन्वेस्टर खड़े नहीं होंगे, कोई पैसा नहीं देगा मुझे, कोई कमिटमेंट नहीं आएगा, मुझे मैं आईपीओ कर ही नहीं पाऊंगा। एक डील काफी है मेरा नाम खराब होने के लिए। तो पैसा जिससे भी आप ला रहे हो, जिसको भी आप बोल रहे हो कि ये अच्छा कंपनी है, उसका पैसा आप लगाओ। यू हैव टू बी वेरी रीजनेबल कि उसका आपने ढंग से डिलीजेंस किया कि नहीं किया, वो जरूरी है।
इसीलिए हम बोलते हैं हमारे लिए कंप्लायंस पहले है, कमर्शियल बाद में है। काम कम होगा चलेगा, लेकिन ऐसा कोई भी कभी भी कोई उंगली उठाएगा नहीं कि आपने ये चीज देखा नहीं था या ढंग से आपने वेरीफाई नहीं किया था। पैसा जो आप रेज करोगे उसको क्या क्या पर्पस के लिए आप यूज कर पाओगे, ये सारा लिखा हुआ है। क्या पर्पस हो सकता है, लोन रिप्लेस कर सकते हैं, आपका टर्म लोन पड़ा हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन पड़ा हुआ है तो इंटरेस्ट बच जाता है। आपको कोई कंपनी खरीदनी है उसके लिए आप यूज कर सकते हो। नया प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है, नया फैक्ट्री लगाना है, उसके लिए यूज कर सकते हो। थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल के लिए भी यूज हो सकता है। ये ब्रॉड एरिया है। प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए यूज हो सकता है। ये सब के लिए आप यूज कर सकते हो जो आईपीओ से आप पैसा रेज करोगे। आईपीओ में इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये तो खाली नाम दिखाने के लिए है, लेकिन इनके सबके टीम इन्वॉल्व होते हैं। लीगल इन्वॉल्व होता है, मर्चेंट बैंकिंग होता है, बैंकर होते हैं, एडवाइजर होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफओ, डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सीईओ, ऑडिटर, कम से कम 10 से 12 टीम एक एक आईपीओ में इन्वॉल्व होता है। और ये नया बच्चा है, 9 महीना कहीं नहीं गया। कोई अगर आपको आके बोलता है मैं 3 महीने में करके देखे जाऊंगा, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आपको, आप किसी से भी बात कर लीजिए, अगर कोई भी आईपीओ आज के दिन में 9 महीने से पहले हो जाता है, मैं मान जाऊँ। क्योंकि प्रिपरेशन में इतना टाइम जाता है। आपको लगता है कि हाँ ये लिस्ट हो गया, लिस्ट आ गया, मैं तो रेडी कर दूंगा, मैंने टीम को दे दिया, वो हो जाएगा। नहीं होता, छोटे छोटे चीजें निकलता है। आप जब पीछे जाके चेक करते हो, किसी का मिनट फाइल नहीं हुआ है, किसी का रिटर्न फाइल नहीं हुआ है, किसी का सर्टिफिकेट रेडी नहीं हुआ है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं मिल रहे हैं आज के दिन में, क्योंकि सबको डर है लायबिलिटी का। ये है मार्केटिंग करने के लिए, अलग बात है, बट लायबिलिटी तो है। बिना देखे तो कोई ऐसे साइन करेगा नहीं। एंड किसी को भी तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करके नहीं बिठाओगे। उनका कंट्रीब्यूशन आपके कंपनी के लिए क्या है? पहले एडिशन क्या है? आपका इंडस्ट्री का है, आपका एरिया का है, आपका बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करेगा, लीगल स्पेशलिस्ट है, अकाउंटिंग स्पेशलिस्ट है, क्या है? एक प्रैक्टिस और जो है, जो नॉर्मली लोग बोलते नहीं है, हम नॉर्मली एडवोकेट करते हैं, सर आई गो विथ यू, इज द एम्प्लॉय पार्ट, इज द ईसॉप। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वाला चीज कोई बात नहीं करता है। बोला मेरे हाथ से मैं क्यों दूं, मुझे क्या वैल्यू मिलने वाला है? दिस इज वन वे ऑफ मेकिंग द एम्प्लॉय द ओनर ऑफ द बिजनेस। आप ये समझ के चलो, आप एंड ऑफ द ईयर में बोनस दे रहे हो, आपने उसको ₹1,00,000 बोनस दे दिया, वो करेगा क्या उसका? या तो खर्चा करेगा, या तो आज तो सोने का दर बढ़ गया, नहीं तो जाके गोल्ड ही खरीद लेते। तीसरा है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का रिटर्न क्या है? 15% साल का साल, उससे ज्यादा तो मिलता नहीं आज के दिन में। अगर आपने उसको शेयर दिया उतना वैल्यू का, आज के दिन में एज ए प्रमोटर स्टैंडर्ड ग्रोथ कोई भी टारगेट करता है ना, 20% के नीचे टारगेट कोई नहीं करता। 20-25% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ के नीचे कोई भी अगर टारगेट करता है तो वो सो रहा है, एटलीस्ट ऑन एसएमई साइड। अगर वो ₹1,00,000 25% अपने घर पे रख के ग्रो हो सकता है, वो बाहर क्यों लगाएगा? प्लस सपोज आपके यहाँ 100 लोग काम कर रहे हैं, आप ये सोचो वो 1 शेयर होल्ड करेगा, वो 1 शेयर के लिए बाकी 99 पीपल आर वर्किंग उसका वैल्यू बढ़ाने के लिए। कौन सा म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर आपका सगा है? उसको अपने फीस की पड़ी है। एफडी में क्या मिलता है हमको? 5%, वो भी इन्फ्लेशन रेट से 2% नीचे। तो इफेक्टिवली वो एम्प्लॉय का सबसे बड़ा हेल्प आप कर रहे हो बाय गिविंग हिम ओनरशिप। उसका भी खुद का स्टेक लग गया उसमें कि मैंने भी पैसा लगा दिया अपने बिजनेस में, सैलरी छोड़ो। तो ही विल ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग डिफरेंटली। तो ओनर के हिसाब से काम करेगा, ना कि एम्प्लॉय के हिसाब से काम करेगा। ये हो गया डायरेक्टर की बात। अच्छा, डायरेक्टर में मैंडेटरी क्या हो गया? लेडीज तो है ही। हम लोग क्या एडवाइस करते हैं टिपिकली, काफी फैमिली में 6-6 जन डायरेक्टर होते हैं। अब बाहर से आपको वापस 6 जन लाना पड़ेगा, क्यों?
क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और घर के डायरेक्टर इक्वल होना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो कोई एक साइड जीतेगा ऐसा अलाउड नहीं है। तो हम बोल रहे हैं कि एसएमई कंपनी में 3 डायरेक्टर बहुत है, 3 घर के 3 बाहर के, और एक इंडिपेंडेंट लेडी डायरेक्टर होना जरूरी है, वो लीगल रिक्वायरमेंट है। बाकी रही, हम पॉस की बात कर रहे थे, ऑडिट कमेटी की बात कर रहे थे, अकाउंटिंग, वो सारे के सारे ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही मैनेज करेंगे। एसएमई क्राइटेरिया ऑलरेडी संदीप बोल चुका है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये हो गई टाइमलाइन की बात। सब लोग पूछे कि कितने, मैंने 9 महीने की बात करी थी, तो आप देखो मैंने ऐसे ही जनरली डाल के रखा हुआ है कि अगर मई में चालू करता हूं तो जनवरी में जाके आपका लिस्टिंग होगा। अच्छा, जनवरी का प्रॉब्लम क्या है? दिसंबर 14 से जनवरी 14 कोई कुछ काम नहीं करता। छुट्टी की बात नहीं है, हमारे खुद की प्रॉब्लम। अपना 7 के महीने में कोई काम करता ही नहीं, नया काम होगा ही नहीं, तो संक्रांति के बाद ही जाके जो काम होने वाला है, तो वो हम महीने भर आराम करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, आराम करते हैं। तो लिटरली इसलिए उन्होंने बोला जनवरी के बाद, 14 के बाद ही आपका काम होने वाला है। इवन तो आप दिसंबर में रेडी हो जाओगे, फिर भी कोई भी प्रमोटर राजी नहीं होता है कि उस महीने में कुछ करना है। कुछ कुछ चीजें इसमें है जो एक्सचेंज के अंडर आ जाता है, अनकंट्रोलेबल चीजें। एक्सचेंज कभी कभी होल्ड कर लेता है बिकॉज दे फील द डॉक्यूमेंटेशन जो किया हुआ है वो ढंग का नहीं है, और क्लैरिफिकेशन चाहिए, और क्वेरीज रेज होता है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू क्या होता है? बेसिकली जो यूटिलाइजेशन की बात आई थी, जो मैंने लिखा था कि आप क्या क्या पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, वही ऑब्जेक्ट्स है, उससे ज्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं। ये डिटेलिंग अगर मैं जाना चाहूंगा तो थोड़ा और टेक्निकल जाएगा, मैं इसे जाने देता हूँ। लेट मी सी समथिंग एल्स व्हिच इज मोर रिलेवेंट। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छा, अभी मैं ऑफलाइन जाऊंगा। वैल्यूएशन की बात हुई थी, तो वैल्यूएशन की बात करते हैं। सबको वैल्यूएशन का बहुत इंटरेस्ट रहता है कि किस पे वैल्यूएशन होता है, प्रॉफिटेबिलिटी पे होता है, सेल्स पे होता है, या तो ऐसे ही मैं 50 मांग रहा हूँ तो 100 दे रहा है, बाकी 50 मेरा, वैसा होता है। तो 3 तरीके के प्रैक्टिसेस मार्केट में है। क्या क्या प्रैक्टिस है? नहीं होता है? कोई बात नहीं। तो 3 तरह का प्रैक्टिसेस मार्केट में चलता है। एक प्रैक्टिस, आप प्रोफेशनल बैंकर हो, जो आपका प्रॉफिट दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उस बेसिस पे आपका वैल्यूएशन होगा। वो वैल्यूएशन जो होता है वो कंपेयर होता है आपके जैसे कंपनी अगर लिस्ट में है ऑलरेडी एक्सचेंज में, उनका क्या वैल्यूएशन चल रहा है, छोटे हो या बड़े हो, उसका वो कंपैरिजन होके, उसका थोड़ा बहुत डिस्काउंटिंग होके वो वैल्यूएशन होता है। ये हो गया पहला। दूसरा क्या हो गया? आप और मैं मिले चाय पे, भाई लिस्टिंग करना है कंपनी का, हाँ भाई बोलो पैट कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 करोड़, चल ठीक है 12 का मल्टीपल देता हूँ, 120 करोड़ का वैल्यूएशन, 30 करोड़ का आईपीओ, कब करेंगे बोलो? ये हो गया दूसरा। तीसरा टाइप का क्या होता है? आप और मैं कहीं ऐसे कॉन्फ्रेंस पे मिले, सर आप आईपीओ करना है? हाँ करना है। कितना पैसा चाहिए? 50 करोड़ चाहिए। चलो ठीक है सर, क्या प्रॉफिट दिखेगा अगले साल का? होगा 10-12 करोड़ होगा। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं 70 करोड़ का आईपीओ करते हैं, 50 आपका 20 मेरा। कोई कॉस्ट के बारे में पूछ रहे थे ना, अभी इसका कॉस्ट का क्या बिठाएंगे आप? 50 करोड़ पे 20 करोड़ का अगर कॉस्ट है तो कॉस्ट का परसेंटेज कहां से आएगा? तो ऐसे 3 तरह के प्रैक्टिस है। मार्केट इसलिए बदनाम है, बोलते हैं एसएमई बदनाम है। एसएमई बदनाम नहीं है, प्रैक्टिस खराब। एंड प्राइमरली वी आर टू ब्लेम, मर्चेंट बैंकर कम्युनिटी टू ब्लेम ओनली, क्योंकि करने वाले हम ही हैं। अगर आप प्रमोटर को ये रास्ता दिखाओ कि भाई साहब आपका रीजनेबल यही है, आपको 10 से 12 ही मिलेगा, उससे ज्यादा रीजनेबल नहीं है, आप जस्टिफाई कैसे करोगे बताओ कि आपका प्रॉफिट का 10 टाइम्स 12 टाइम्स जो भी आप बोल रहे हो, जो भी 1 रुपया लगाना चाहता है एज ए इन्वेस्टर, उसको कितने दिन में वो रिटर्न आएगा?
वो कैलकुलेशन कभी किया है हमने? बैच कैलकुलेशन किया है हमने? नहीं किया होता। खाली एज ए प्रमोटर मैं 25% डाइल्यूट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पूरा का पूरा वैल्यूएशन हाथ पे लेके घर पे जाना है, और सामने वाला जो पैसे दे उसका क्या, उसको कोई देखने वाला नहीं है। वो डूबे मरे जो भी है, अब पहला दिन जब लिस्टिंग हो वो 30% डिस्काउंट भी हो जाए, प्रमोटर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे प्रमोटर से हमको दूर रहना है। एज ए एडवाइजर बोल रहा हूँ, एज ए मर्चेंट बैंकर भी बोल रहा हूँ, एज प्रैक्टिस रेगुलेटर भी बोल रहा हूँ, तीनों साइड की देख के बोल रहा हूँ। बट अगेन वो प्रैक्टिस धीरे धीरे बंद होने लगा है, क्योंकि इनिशियली जो 2 साल का यूफोरिया रहा 23, 24, 24, 25 का, कि 10-10 करोड़ 12 करोड़ का भी ट्रांजैक्शन हुए, somebody was talking about 20 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है। आज के दिन में कोई करता नहीं। 50-60 करोड़ के नीचे का ट्रांजैक्शन आज के दिन में कोई नहीं करता, बिकॉज कॉस्ट नहीं बैठता। अच्छा, कॉस्ट की बात करी जो हम चार्ज करते हैं, हम 10 से 11% चार्ज करते हैं, लेकिन 10 से 11% का जो चार्ज है दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग। रेगुलेटरी कॉस्ट भी रहता है, मार्केटिंग कॉस्ट भी रहता है, उसमें आपका अंडर राइटिंग भी कॉस्ट रहता है, आपका न्यूज़पेपर का जो पब्लिकेशन वो कॉस्ट रहता है, एक्सचेंज का भी कॉस्ट रहता है, लीगल कॉस्ट रहता है, सब कुछ उसमें बिल्डिंग होके चलता है। अदर वे ऑफ सेइंग दैट आपका 1 साल का फंड बोरोइंग का जो कॉस्ट है फ्रॉम ए बैंक ब्रॉडली उसी रेंज में आए। लोग ने 18% भी लिया है, 20% भी लिया है, 30% भी लिया है, तो वैसा प्रैक्टिसेस का हम क्या करें? एक्सचेंज कैन स्टॉप इट, बिकॉज जो डॉक्यूमेंटेशन पे डिस्क्लोज होता है उसमें 12% डिस्क्लोजर होता है, दे कांट स्टॉप इट। बैक एंड में जो हाथ लेन देन होता है उसका आपको पता भी नहीं, यू हैव नो क्लू अबाउट इट, लेकिन होता है। उसके चलते जैसे ही ये कंपनियां लिस्ट होती हैं, ये आधे आधे भाव में आ जाता है नीचे। जिसको जो अपना फीस लेना है वो तो लेके निकल गया, आप क्या करेंगे? तो प्रैक्टिस के वाइज अगर आपका कंपनी है, हमारे हिसाब से जो हम गाइडेंस देते हैं 100 करोड़ का टॉप लाइन, कम से कम डबल डिजिट का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब 10 करोड़ का कम से कम पैट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आज के दिन में टर्नओवर और प्रॉफिट करना आसान नहीं है। जीएसटी है, अगर आपको 100 करोड़ का टर्नओवर बिल घुमा के दिखाना है तो 18 करोड़ का जीएसटी तो देना पड़ेगा। उससे अच्छा प्रॉपरली जो कंपनी है वो वेरिफिकेशन हो जाता है। आज के दिन में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि डिटेलिंग पता नहीं चलता, थर्ड पार्टी बैठे हुए हैं वो वेरीफाई करके सब बता देते हैं कि कितना अच्छा है कितना बुरा है। तो ये होने के बाद हमारा क्राइटेरिया है कि हम ऑलमोस्ट 6 महीने से साल भर का आगे का नंबर लेके चलते हैं। मतलब अगर ये मई का हुआ, मार्च का महीने का जो नंबर है उसको मैं यूज करूंगा डॉक्यूमेंट के लिए, लेकिन जो आपका वैल्यूएशन होगा वो मार्च 27 के नंबर पे होगा। क्यों होगा उसका भी मेरा लॉजिक समझा रहा हूँ। अगर मैं अभी काम चालू किया, आपका काम होते होते जनवरी फरवरी हो गया, मतलब साल मोरलेस खत्म ही हो गया, तो नंबर तो मुझे पता चल ही जाता है। आपका जीएसटी रिटर्न फाइल होते मुझे नंबर तो पता चल ही जाता है, तो हिस्टोरिकल नंबर हो गया। तो मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं रहता कि आप वो नंबर अचीव नहीं करोगे। अगर आप नंबर अचीव नहीं करोगे तो मेरे पास चॉइस है कि मैं आईपीओ का साइज कम कर दूंगा। पेपर फाइल होने के बाद भी मेरे पास चॉइस है कि आईपीओ का साइज में 20% कम कर सकता हूँ या बढ़ा भी सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन। एक कंपनी अभी मेरा हाथ से गया, 800 करोड़ का आईपीओ था, आप देख लेना न्यूज आइटम पे रहेगा। वारी एनर्जी ने एक कंपनी खरीदा बड़ौदा में, एसोसिएटेड पावर स्ट्रक्चर्स करके, 55% उन्होंने खरीदा, 1225 करोड़ का, उसका आईपीओ हमने फाइल किया था 800 करोड़ का। तो जनवरी 26 वाला जो वीक था उसमें वो न्यूज आइटम आया, उसी दिन सेबी से भी मुझे अप्रूवल लेटर आया आईपीओ गो अहेड बोल। आईपीओ मेरे हाथ से गया, लेकिन 1.5 साल पहले जब मैंने उसका मैंडेट साइन किया था आईपीओ 200 करोड़ का था, उनका टर्नओवर 400 करोड़ का था। साल भर में उनका टर्नओवर 3 गुना हो गया, 1200 करोड़ हो गया। ऑर्डर बुक 800 करोड़ से 4000 करोड़ हो गया। तो आईपीओ साइज भी मेरा 200 से बढ़ के 800 करोड़। सारा डिटेल जैसे हमने पब्लिक में फाइल कर दिया, अवारी ने देख लिया, अवारी जाके डायरेक्टली बैठ गया प्रमोटर के साथ, बैठ के नेगोशिएट करके खरीद लिया। तो आइडिया है कंपनी ग्रो हो सकते हैं, उसके हिसाब से आईपीओ भी ग्रो हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं 200 मतलब 200 ही पकड़ कर रखूंगा। ऐसा भी हुआ है कि आपने जो कमिट किया था नंबर वो आप
जब तक आईपीओ होगा तब तक वो नंबर अचीव नहीं हुआ, तो हमने आईपीओ का साइज भी रिड्यूस किया। ये है ब्रॉडर गाइडेंस। डिटेलिंग देखिए, आज जिनको भी इंटरेस्ट है सामने बैठो आप और थोड़ा निटी-ग्रिटीज के बारे में समझाओ कि क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सी शेर की सवारी में आप निकल रहे हो। ये शेर की सवारी है, एक बार आप बैठ के उतर नहीं सकते आप, एंड लाइफ लॉन्ग ऐसे ही चलेगा। हम लोग बोलते हैं ना, शादी आप मल्टीपल टाइम कर पाओगे, आईपीओ एक ही बार होता है। ऐसे ही है, क्वार्टर से क्वार्टर तक। तो शेर की सवारी करनी है तो आपको लगेगा तो अच्छा, लेकिन उसके साथ अपना वो डिस्क्लेमर भी चलता है। तो ये है बात। और डिटेलिंग में और चाहिए, एनीवे प्रेजेंटेशन में शेयर कर दूंगा, यू कैन शेयर विद द पीपल। ब्रॉडर नंबर्स ऐसा ही है, गाइडेंस ऐसा ही है। टेक्निकल चीजें आप अपना सीएफओ है या फिर कंपनी सेक्रेटरी हैं, जो भी हैं, उनके साथ इनको बिठाइए, सो दैट दे विल गिव द गाइडेंस कि आप रेडी हो या नहीं हो। और मैं तो अभी भी करूं कि जब तक आपका बैंक का फाइनेंस चलता है, आप फाइनेंस कर पा रहे हो और उसको सर्विस कर पा रहे हो, बैंक के साथ ही चलो। आईपीओ शुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट। यहाँ और आगे मेरे पास रेज करने के लिए कोई तरीका ही नहीं है, बिकॉज कॉस्ट वाइज ऑल्सो बैंक बोरोइंग इज द लोएस्ट कॉस्ट ऑलवेज। आपको पैसा ही तो वापस करना है। यहाँ पे तो एक बार ओनरशिप गया तो गया हाथ से, वापस कुछ नहीं आने वाला है। 25% 26% आप डाइल्यूट करोगे, ओनरशिप हाथ से जाता है। तो एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू सर्विस द बैंक लोन एंड बैंक आपको अच्छे रेट पे दे रहा है, बैंक का लोन ही लेके चलो। एंड ऑफ कोर्स इंटरनली आप कितना रेडी हो, आपकी टीम कितना रेडी है, आपका सॉफ्टवेयर कितना रेडी है। हाँ, somebody was talking about the बैक ऑफिस। हम कुछ चीजें से एलर्जिक है, जैसे टैली से हम एलर्जिक है, क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं डेटा, कोई भी कुछ भी बना के दे देगा। बैंक रिपोर्ट अलग, आपके लिए रिपोर्ट अलग, इन्वेस्टर के लिए रिपोर्ट अलग, 3 रिपोर्ट भी निकल सकता है। तो आपका वो सारा चीजें, जैसे ईआरपी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, आपके गवर्नेंस से आपको देखने पड़ेंगे, कुछ हद तक आपको काफी लोगों का हाथ बांधना पड़ेगा, कैश ट्रांजैक्शन आपको कम करने पड़ेंगे, डिजिटल ट्रांजैक्शन, आई थिंक मैडम बोले डिजिटल ट्रांजैक्शन शुड बी दी मोटो एवरीवेयर व्हिच इज सीमलेस। तो ये सारी चीजें आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हाँ, सबसे बड़ा जो चीज है, आई थिंक श्रीधर वाज टॉकिंग अबाउट द ग्रीन पार्ट। कहीं ना कहीं आप अगर अपना बिजनेस को ग्रीन साइड में थोड़ा दिखा पाओगे, एनवायरमेंट साइड में थोड़ा दिखा पाओगे, दैट इज दी थिंग। बोलते हैं ना, दी लेटेस्ट ट्रेंड बोलते हैं, वो लेटेस्ट ट्रेंड है। चाहे वो सर्विस कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, कुछ भी हो, अगर कुछ आप दिखा सकते हो कि मैं ग्रीन साइड में ये काम कर रहा हूँ, पेड़ लगा रहा हूँ, या फिर जो मेरा वेस्ट निकलता है दैट इज टोटली ट्रीटेड, वो अगर हम हाईलाइट कर पाते हैं, दैट विल बी अ वंडरफुल थिंग। मैं अगर वर्कर्स को अच्छा से ट्रीट कर रहा हूँ, या फिर मेरा इंश्योरेंस जो अच्छा लिया हुआ है, या मेरा हॉस्पिटल जो है उनको फैसिलिटी दिया वो अच्छा है, ये सारा चीज आज के दिन में बहुत बहुत मायने रखता है, ना कि आप कितना एक्चुअली पैसा कमा रहे हो। हाँ, दैट इज वन पार्ट फॉर द इन्वेस्टर्स, बट मेजोरिटी ऑफ दी लोग देखते हैं हाँ ये भी तो कमा रहे हैं, आप भी कमा रहे हो, आप और इनमें फर्क क्या है। आप बोलते हैं बस हम ग्रीन है, हम कितना सोलर यूज करते हैं, कितना विंड यूज करते हैं, कितना वेस्ट मैनेज करते हैं, कितना वेस्ट रिड्यूस कर रहे हैं, कितना पेड़ लगा रहे हैं, वो सारा चीज मैटर करता है। बाकी एनी क्वेश्चंस, आई एम हियर। यस मैम। You said the Bari case study, and you also said that it's a tiger on which you ride only once. Yes. So what stage did No, Bari? tiger is a permanent thing. Yeah, but then what stage did Bari go out into? Meaning you said you lost. When I filed the DRHP, all the information became public. Okay. That 500-page document. So can they go back from there? Is what I'm asking. Bari has already declared, they already purchased. I lost the IPO. Okay. So can that happen? Meaning It happens. once you- Yeah, this is the risk you run. In a market for us, this is the risk I run. Any company can come and buy it. Unless until I have gone ahead and done the IPO, that risk is always there. So there can't be a contract saying that once Not you at all. start this. Not at all. I can only charge a cost. Right. I can ask कि हाँ जो मेरा खर्चा हुआ आप मुझे दे दो, उससे ज़्यादा you can't stop. Okay. You can't actually handhold, tie down the promoter saying that Yeah, you can't do this. वो बड़ा मुश्किल होता है. Nobody actually agrees.
क्योंकि जैसे ही DRHP फाइल हो जाता है, डॉक्यूमेंट फाइल, कंपनी का छोटे से छोटे डिटेल पब्लिक हो जाता है विद द फाइनेंशियल नंबर्स, विद लॉट ऑफ असेसमेंट, एंड कितना पैसा वो रेज कर रहा है उसका भी डिटेलिंग जाता है. दैट मीन्स वैल्यूएशंस आर आल्सो डिस्क्लोज्ड मोर और लेस. तो समझ में आ जाता है कि कंपनी में कैपेबिलिटी क्या है. और ये खर्चा जो कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री में होते हैं ना, उनको समझ में आ जाता है 500 करोड़ अगर रेज कर रहा है तो किस पर्पज के लिए रेज कर रहा है. 5000 करोड़ बनाएगा तभी वो रेज कर रहा है 500 करोड़, तो पोटेंशियल है, तो ये प्राइम टारगेट बन जाता है. And in terms of the director's appointment, the board composition, is that required after the IPO or before they file the Before the filing. Without their appointment, I cannot file it. प्लस ऑडिटर का रिक्वायरमेंट रहता है, रीस्टेटमेंट्स होते हैं, पीयर रिव्यूड ऑडिटर्स होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी मैंडेटरी है, एक्सपीरियंस कंपनी सेक्रेटरी. फ्रेशर अलाउड ही नहीं है, ये लोग रिजेक्ट कर देंगे. एटलीस्ट 2 to 3 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है कंपनी सेक्रेटरी. सो एवरी लिस्टेड कंपनी टुडे इज ऑन लुकआउट फॉर ए कंपनी सेक्रेटरी. जो भी 100, 150, 200 जो भी कंपनी आज के दिन में एसएमई में जा रहे हैं, सबको कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत है, एंड दैट टू एक्सपीरियंस्ड. प्लस CFO है, प्लस दी ओनर्स है, मतलब इट्स ए ह्यूज रिक्वायरमेंट. प्लस एक मेजर एरिया जो आज के पहले था नहीं, आज के दिन में हैज ओपन अप, इज दी इन्वेस्टर रिलेशनशिप एंड PR. So IR PR activity, actually PR activity starts before the IPO. IR activity continues with the IPO and post IPO also. क्योंकि आप जो भी काम करते हो, जो भी आपके इन्वेस्टर हैं, उनके साथ आपको कंटिन्यूसली एंगेज करना पड़ेगा. There are agencies and setups like her who will interact with the investor base and आपके साथ वो एंगेजमेंट चलता रहेगा. क्यों? क्योंकि आप डे टू डे बात नहीं कर सकते. आप जो डेवलप कर रहे हो, आप जो बिजनेस बढ़ा रहे हो, वो इन्वेस्टर के साथ आपको एंगेज करना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, दे आर ऑन द लाइन टू गिव यू द मनी. वो एक एरिया है which is a big thing which is coming up today. Lot of agencies are doing that. So likewise, when you gave your insight upon going with debt or going with IPO, what's your experience? It's not a question. What's your experience with the same with private equity and bank debt? Yes. First thing, and second, sir, for a asset based company, like we are into real estate. Yes. We have our own assets that, as per valuations, they go into crores and crores of crores. How does that valuation comes into effect or does not comes into effect while filing for an IPO? ठीक, पहला क्वेश्चन फर्स्ट आंसर करता हूँ. Now, private equity, see in the market, if you segregate, there are only two markets, private and public. Private equity and venture capital are two names given because of the size of the investment. Both are part of the private equity markets. VC is a small market. Up to $5 million VC में आ जाता है. सीड में भी VC आते हैं एंड अप टू सीरीज ए तक. सीरीज ए बेसिकली $5 million, वहां तक आपका VC आ जाता है. प्राइवेट इक्विटी टिपिकली स्टार्ट्स एट 10 million एंड अबव. बड़ा साइज का होता है प्राइवेट इक्विटी. प्राइवेट इक्विटी और VC has more or less similar kind of thought processes. They want multiples. उन लोगों को 20% नहीं चाहिए, उसको 20 टाइम चाहिए. वो थॉट प्रोसेस में वो इन्वेस्ट करते हैं एंड उनका पूरा गियर भी वैसा ही होता है कि 3 to 5 years is what they are going to hold and they will exit. नॉर्मली कोई रुकते नहीं है. उनका थॉट प्रोसेस भी ऐसा है, कोई बड़ा फंड आएगा वो लेके जाता है. ये हो गया प्राइवेट इक्विटी. Now why प्राइवेट इक्विटी? Suppose you are in a growth phase, right? आपको पैसे की जरूरत है, लेकिन आपका बैंक फंडिंग के लिए आपके पास कोलैटरल्स नहीं है. यू आर एसेट लाइट कंपनी, राइट? बैंक तो कोलैटरल मांगता है, क्या करोगे? सो देन व्हाट यू डू, बिटवीन 5 to 10% के रेंज में यू डाइल्यूट द कंपनी. नाउ टिपिकली देयर आर टू टाइप ऑफ प्राइवेट इक्विटीज. वन व्हिच आर इन्वेस्टिंग इनटू कंपनीज व्हिच आर प्रीटी क्लोजर टू मैच्योरिटी, मतलब आप 2 साल में आईपीओ में जाओगे. देयर आर कंपनीज व्हिच आर गोइंग टू वेट फॉर 5 years टू रीच दैट साइज. टू टाइप्स आर देयर. काफी हद तक बड़े जो अभी आज के डेट में आ रहे हैं, 2-2 साल के होते हैं. 2 साल के लिए दे विल वेट, दे विल बी हार्ड काइंड ऑफ एग्रीमेंट कि 2 साल के अंदर आपको फिर आईपीओ में जाना है, तो उनको एग्जिट करना है, व्हिच इज काइंड ऑफ ए क्वासी आईपीओ. 2 साल तक आपने डेफर कर दिया. बाकी जो लंबा रहता है वो 5 साल तक चलते हैं, वो दे वेट आउट, फिर वो बड़े होते हैं, वो अलग साइज का हो गया.
But primary requirement for a private equity is because you are in a growth phase and you do not have the bank finance available. If you grow, your IPO valuation will be far superior compared to what you are getting. That is why you should be getting into private equity. ये हो गया पहला. Now, second part is, how do I put it? Do you have a solution on that? As an asset, let's talk about pure businessman wise. Your business is real estate. So your real estate is what? As if you talk about a profit and loss or balance sheet item. So it's more or less how easy. No, balance sheet item के हिसाब से क्या configuration? Classification क्या है? Your real estate, your land parcels are classified in your balance sheet as what? Yes, sir. That's not. पहला सर या तो investment category में रखा हुआ है या तो stock में रखा हुआ है. So nature of business is your stock in trade. More or less, but our forthcoming projects. Stock in trade ही है, right? तो raw material हो गया ना बस. हाँ, raw material. Correct. रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन मार्केट बेसिस पे कैसे हो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है? कॉस्ट का, राइट? Cost का लेता है. करेक्ट. सो फॉर आईपीओ पर्पस आई कैन नॉट वैल्यू दैट एज मार्केट. और वैसे इन्वेस्टमेंट में रखा हुआ है. दैट इज कैपिटल गेन्स. वो आपका धंधा है भी नहीं. ठीक है. वो भी नहीं आएगा. सो टिपिकली वही बोलते हैं, दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द फंड. कि मेरा एसेट वैल्यू 1000 करोड़ का है. मतलब भाई साहब, आप उसे एसेट में ट्रेडिंग थोड़ी कर रहे हो. आप तो चॉकलेट बना रहे हो. आपका बिजनेस चॉकलेट बनाना, ना कि आपको फैक्ट्री बनाना है और बेचना है. देन यू आर एपीसी प्लेयर और रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म और इंफ्रा प्लेयर. करेक्ट. तो आपका नेचर ऑफ बिजनेस ही अलग हो गया. सो अकॉर्डिंगली द वैल्यूएशन गोस. वैल्यूएशन इज ऑलवेज ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. बट अगर मेजॉरिटी ऑफ आपका प्रॉफिट जो है इज फ्रॉम कैपिटल गेन्स, थोड़ी मैं उसको लूंगा आपका एंड गिव यू द वैल्यूएशन ऑफ ए प्रॉपर कंपनी. वो नहीं होता. योर मेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट शुड बी मेन. बाकी सब तो अदर इनकम है ना बस. अदर इनकम का क्या वैल्यूएशन? वो ये साल है, अगले साल नहीं रहेगा. हाउ डू आई वैल्यू दैट? राइट. तो कोर कॉम्पिटेंसी इज दैट. और एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आता है कि सर मेरा लिस्टिंग हो गया, उसके बाद क्या? बोले आपको क्या? आपका शेयर प्राइस आया, आपको क्या लेना है? योर कोर कॉम्पिटेंसी इज टू रन द बिजनेस. ताकि आपको शेयर ट्रेडिंग करना है तो सारा बिजनेस बेच दो, ब्रोकर बन जाओ. Then you will do better. तो फोकस जो है, आप जिस चीज पे आप अच्छा कर रहे हो, चाहे वो चॉकलेट बना रहे हो, स्टील बना रहे हो, रियल एस्टेट बना रहे हो, उस पे फोकस करेंगे, उसी का प्रॉफिट बढ़ाना है आपको. वही प्रॉफिट पे आपको पब्लिक आपका मल्टीपल देने वाले हैं. दैट्स हाउ द फंडामेंटल्स आर. लोग उसको थोड़ा कंफ्यूज करके मिक्सअप कर देते हैं कि सर लिस्टिंग के बाद में मेरा शेयर प्राइस मेंटेन होना चाहिए. और सर आप जिसको बोलोगे, आप तो छोड़ो, वो पहले जेल जाएगा, उसका लाइसेंस जाएगा, वो जेल जाएगा. कभी भी गलती से भी फॉर्मली किसी को लिख मत देना कि भाई साहब मेरा लिस्टिंग के बाद प्राइस मेंटेन होना चाहिए. तो हमारे यहाँ ऐसे बहुत है. तो ये है. एनीथिंग एल्स सर? एक सिनेरियो है कि कंपनी की प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए. हाँ. तो उसका जो भी मल्टीपल 10, 12, 15 जो भी है, उसके हिसाब से वैल्यूएशन करते हैं और 25% डाइल्यूशन, मिनिमम डाइल्यूशन. करेक्ट. बट कंपनी के बुक्स में एक फिक्स एसेट है व्हिच इज वर्थ few hundred crores. So अभी प्रमोटर तो वो नहीं चाहेगा ना मेरी कंपनी के वैल्यूएशन में 25% डाइल्यूट करके मैं इतने बड़े एसेट का एक्सपोजर दूं. उस सिनेरियो में क्या होगा? कुछ कंपनियां उसको डिमर्ज कर लेते हैं, कार्व आउट करके दूसरे कंपनी में ले लेते हैं एंड रेंट आउट करते हैं. लेकिन दैट इज अ नेगेटिव थिंग टू डू आल्सो, कि आप डिलिबरेटली एसेट आपने निकाल लिया. कल को अगर उस कंपनी ने डिक्लाइन कर दिया एसेट यूज करने के लिए, तो इस कंपनी का क्या राइट है? अनलेस देयर इज ए एग्रीमेंट व्हिच इज वाटर टाइट, या आप ये कंपनी और जो प्लांट एंड मशीनरी और किसी को दे नहीं पाओ. एन एग्रीमेंट इज रजिस्टर्ड इन द कोर्ट एंड एवरीथिंग इज क्लैरिफाइड बाय द लीगल. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. वो होता है. प्रमोटर बिल्डिंग खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, एंड ऑल दोज आर लीज्ड बैक टू द कंपनी व्हिच इज going for IPO. That happens.
There's nothing wrong with it. It's a क्या बोलते हैं? It's a practice of keeping the asset out. But अगर existing है और उसको आप carve out कर रहे हो, if you do not have a watertight agreement, huge questions will come. Especially in pharma companies, जहाँ पे आपका formulations का जो IP होता है, patents होता है, those are primarily on the name of the promoters, who are doctors, who are scientists. उनके नाम पे फाइल हुआ रहता है. लेकिन जो प्रोडक्शन होता है वो कंपनी में होता है. Even though company pays royalty to that, what if the promoter says मैं नहीं दूंगा? इस कंपनी तो डूब गया, और कुछ नहीं है इसमें. There is nothing else left. So इसके लिए you need to be very careful as to whether the agreements are watertight or not. ये हमको डिस्क्लोज करना पड़ता है. Sustainability of business में आता है वो. Is there any risk to the business? तो ये रिस्क में आता है. Promoter and companies are always separate. मैं अभी सुबह बोल ही रहा था. They are always separate. कल को अगर आईपी का ढंग का पैसा मिला वो बेच के निकलेंगे. क्या कर लोगे आप? Forget about that. The next generation comes in. सक्सेसर में उनको आईपी मिला, वो बोले मेरे को कंपनी से क्या लेना, आप कंपनी चलाओ, मैं अपना पेटेंट बेच के दूसरे को पैसे लेकर आऊंगा. बड़ा कंपनी कोई आ गया बाहर से, they give 10 times the price, थोड़ी रुकने वाला है. They'll give the patent and go. जो कंपनी लिस्ट है उसका क्या डूब जाएगा. Because you don't have anything. They're just one more manufacturing company without any IP, without any patent. वो सब थोड़ा टची इश्यूज रहता है. So we go deeper into it to check whether the production which you are doing, you have absolute right, and the company owns the copyright and the patent and everything or not, or control have it. पूरा का पूरा कंट्रोल है. वैल्यूएशन दो पार्ट्स में होता है, प्री मनी, पोस्ट मनी. प्री मनी किसको बोलते हैं? सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर पैट मल्टीप्लाइड बाय जो भी है. पोस्ट मनी क्या है? उसका 25% ऐड हो जाता है. तो आज के दिन में 100 रुपए का आपका वैल्यूएशन है, आप उसका 25% डाइल्यूट कर रहे हो, आ रहा है एडिशनल 25 रुपए, तो 100 वाला से 125 हो जाता है. दैट इज पोस्ट मनी. टिपिकली जो वैल्यूएशन आप मार्केट में देखोगे जो बोलते हैं आईपीओ वैल्यू, वो पोस्ट मनी का वैल्यू. प्री मनी एक्चुअली वो प्रैक्टिस में कोई बात नहीं करते. दैट इज टिपिकली टेक्निकल डिस्कशन बिटवीन द मर्चेंट बैंकर्स एंड द इन्वेस्टर्स वो होता है. दे वुड लाइक टू सी कितना सस्ते में हमको कंपनी मिल रहा है. प्री मनी, पोस्ट मनी पी में चलता है. पी इज बेसिकली नथिंग बट प्राइस अर्निंग रेशियो. वो पैट पे चलता है. एसएमई में पैट पे चलता है. मेन बोर्ड में ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे चलता है, विच इज बेसिकली एबिटा. सो ईवी एबिटा हम लोग बोलते हैं इज द मल्टीपल विच यू यूज फॉर वैल्यूएशन ऑफ द मेन बोर्ड कंपनीज. क्यों? बिकॉज एज यू राइटली सेड, इफ यू आर एसेट हैवी कंपनी, आपका ईवी एबिटा से पैट तक आते आते दो तीन चीजें आ जाते हैं बीच में. डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट दोनों आता है, राइट? मेजर वो चीजें. एसेट हैवी तो डेप्रिसिएशन आ गया, उसका फंडिंग हुआ तो इंटरेस्ट आ गया, राइट? अगर आपका 20% का एबिटा मार्जिन है, ये माइनस होके पैट आता है तो 10% आ गया. सो वी सी वेदर द कन्वर्शन बिटवीन एबिटा एंड पैट इज बिग और नॉट. अगर बड़ा है तो हम उसको एक वेटेड एवरेज करके दोनों का वैल्यूएशन करके निकालते हैं. आई डोंट टेक ओनली पैट, वो भी होता है. बिकॉज यू हैव टू गिव द वेटेज टू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑल्सो. कैश फ्लो तो वही है ना, बाकी सब तो साइड का है. यस मैम. डन. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. At least 3 people online commented the session was very interesting. कितने जन हैं? अभी हो गए खत्म. But I think went up and then down. I didn't track, but I got the comments. Thank you. सर आपका नीचे था. अच्छा ये मेरा नहीं, सॉरी. I didn't see that. Sorry. Thank you. Okay, so I think we come to the last session I had kept for myself. I'm going to talk about, I am a company secretary by profession and corporate governance expert. So I'm going to touch upon some points of corporate governance. We had a long day today. I'll take 20 minutes and then keep it open for Q&A by all the panelists here. Yeah. Great. So,
being a company secretary, I have always seen boardrooms very closely. And that's where when I realized that Indian boards, I mean, there are, companies which are listed, huge number is which is still unlisted. So how we bring the best governance practices for the companies which are not yet listed, but going and getting listed is what, the Mentormy board with that vision we created, that how do we enhance the effectiveness of the boardrooms for India. And when we start nurturing the thought leadership at the top, how the things changes is what I think, when Sridhar spoke about in the morning, we all, actually saw that how that transformation happens when the top management, the promoters are involved in better practices. So I'll skip this, but this is where, even Soumya mentioned, at the end, is that proprietorship, OPC, are the structures where liability is unlimited. A lot of times promoters themselves are owners of the company and they completely control the environment of the company, right? And that's where a lot of decision making is with the promoter. He is the one who can, turn the tables. He's the one who can take boldest decisions in the companies. But the moment, you are going and getting, exposed to external funding, the public funding, or even the private equity, or, those kind of funding structures, that's where private limited, public limited, and listed companies come into picture. So when we talk about the challenges, the access to investment is a big challenge when we are closely held companies. But that's where when companies are going and getting listed on the IPOs, they are majorly called as well-governed, structures, and that's where more trust of the investors starts coming in. So today the universe of listed companies is close to around 8,000 companies are listed, but almost 3.5 crore registered MSMEs and 4 crore are unregistered MSMEs in India. So 7 crore, 7.5 crore is the statistics, out of which only 8,000 companies are under the universe of listed promoters. So that's kind of, a thought process you all, should take back to, your offices, your, companies, that do you want to be part of that universe of, exclusive, short number. And again, out of 8,000, hardly 3,000 will be actively traded listed companies. So definitely this, actually sets apart. And when we talk about the marketing, the visibility, you create nationwide visibility by just becoming the part of that smaller universe of 8,000 companies. So there are, I mean, we all know these companies, right? And what differentiates these companies from those 7 crore SMEs and MSMEs is what exactly, well-governed corporate structure. This is where I think this becomes the biggest differentiator. Now, what are they doing differently? I'm going to touch upon that point here. Is that, and there is a proven statistics and research which talks about that when the markets reward the companies which are following better corporate governance practices. And again, as I think Deepak mentioned, that corporate governance is not only compliance, it's much beyond compliance. And I always tell one thing, compliance is a lot of times external. It's a push from the regulators, it's a push from the stock exchanges, it's a push from the, the ministry, by way of company law when they've defined. But corporate governance is a lot of internal. How are you looking at, the compliance? How are you looking at setting up better systems and processes? How are you looking at the culture in the organization which is being built? So compliance, a lot of times, is an external push, whereas governance is an internal push from the organizations. And yeah, these are the reasons, majorly the differentiator between the not so good companies or, the well-governed companies which demand better valuation, better market cap. So these becomes very important, that transparency, investor trust, risk management, the way they manage their risk, the way their assets are protected, the way their employees are taken care of, the way they are foreseeing the future. That's where a lot of strategic discussion in the boardroom becomes very, very important. Again, how the company is building up leadership. And I'm telling you, when we talk to a lot of promoters, they've been running businesses like solopreneurs. They don't have the second line ready. And I always tell everyone that if you don't know who your second line is, don't think of going for IPO immediately.
build your second line, because the markets definitely want to see how the businesses, are creating the succession and the sustainable way of looking at it. So that's where, the moment somebody starts thinking of that, okay, I want to go for IPO, the first and foremost thing is, do you have a second line? Do you have the CXOs, the CTO, CMO, CRO, CFO, company secretary? So that is what your second line, which gets created. And then the executive directors, your senior leaders who are there with the organization for 10-15 years, are you promoting them to the executive director role with you, who are sitting in the boardroom with you to take the decisions for the company? And then accountability, definitely, when the businesses are more accountable, that's not only accountability to the shareholders, it's a complete stakeholder ecosystem, which includes the regulators, which includes the society as a whole. So again, a lot of times, this is one very important point where when we go to the smaller companies, I mean, I've done roadshows in so many, master classes in so many smaller cities, and a lot of times in the smaller cities, the big challenge is, करना क्यों है? Grow क्यों करना है? We are happy, we are satisfied with our growth. जितना कर रहे हैं, घर जाके शाम को 6 बजे जाके फ्रेंड्स के साथ हम लोग गप्पे लड़ा सकते हैं, बैठ सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं. So unless the promoter has that hunger to grow and contribute to the nation, to the ecosystem overall, I don't think they will be able to think of taking the step for going for IPO. And a lot of times people say itna paisa kama rahe kafi hai. But I think this also becomes the biggest motivator for a lot of people, that how do you create more wealth so that you are able to contribute more to the society. And I think this is the 2022 statistics, but I was just checking 24-25 statistics. This 121 billion is already 200 plus billion, Indian rupees as a CSR contribution by the companies which are listed on the exchanges. So if you are earning more money, you definitely have better chance of contributing to the ecosystem more. So again, employment creation, the larger the organizations, I'm sure, Manorama, the time when they were 200 crore of market cap, the number of employees they might be onboarded today, I'm sure they have a huge, bigger impact on the society by way of creating more employment generation. I'll skip this, but this is very important. There is a book called The Fish Rots from Its Head. It's not an Indian book, and I don't think there are many editions available on even Amazon. But if somebody wants to understand the boardroom practices, how the boardrooms change the game for the organizations, this book is something wonderful. I've read it, and few of my initial thoughts on Mentor My Board emerged out of this book. So the promoters definitely, Soumya spoke a lot about, a lot of things. Sridhar spoke about it. How do you vision? Vision building is very important, because if the promoters don't have vision, they're not going to be able to build the organization going forward. So, a lot of things are covered by, both of them. So I'll not get into that. But this is a book, A Fish Rots from the Head, is something very important. So next steps, I think a lot of times promoters, they come, they attend, they listen, they meet a lot of people, but they don't take the steps forward. So what are the immediate steps which promoters should, start taking? Is definitely, first is, the belief. Can, our product reach out to Pan India? Can our, company reach out to Pan India? Can we get listed? Having a vision, having belief in the product is very, very important. And unless this comes in, people will not be able to take up that step. And the second is the commitment. So once you get listed, and a lot of times people, when especially in the SME space, we go and say, a lot of people say that, oh, SME mein to log sirf paisa lene hi aate. It's not that. I mean, if you really want to be committed to, take your company to the next level, the commitment to excellence is very important. Commitment to the future opportunities for the business is very important. And optimism in the investor relations, that's something, it's a consistent effort. And I think in the morning, the question came up as that post IPO, the number tanks, the valuation tanks, the prices go half. I think that is the time the promoter's commitment comes into very, very, important role play happens there. Because you're not coming to market for 6 months. You're not coming to market for a year. You're coming to the market for the future sustainable growth of the organization. And the valuation going down, market sentiments going down,
It can happen. But if the business of the company is strong, if the promoters are having that belief, they can, bounce back with the better performance in the organization. And then again, action taking is build a team. I mean, I'll tell you, Nagpur IPO roadshow we did almost a year back. The one of the promoter who came to the masterclass there, I think last 1 year has been consistently working on only this one point, which he took up as an action from that masterclass is building up team. He said, I don't think I have a second level of my leadership ready. So last 1 year he's been working on this point, and he said now is the time that we want to go with the mentorship, and from 50 crore we want to move it to the next level. So I think one action will take at least a year or a two to build before you even start thinking of going to IPO. And whenever you the first thing is the moment you said yes, I'm ready for IPO, reach out to Soumya. I think this has been covered. I'll not get into that. But IPO ecosystem, yes, as Soumya mentioned, lot of players will be required in the entire IPO ecosystem. What Mentor My Board does, I think this is one slide I would just take 2 more minutes, to go deep dive into. We work on the complete IPO advisory, whether it includes creating a right ecosystem of experts, corporate governance advisory. That's our specialty. We have 100 plus mentors onboarded with us who come with diverse industry, diverse experience, with the board experience for 20-25 years. And the transformation, the complete business transformation, board transformation, what Sridhar spoke about in the morning. Education, we do a lot of B2B, B2C education for women directors, independent directors, promoters, founders. So we run special masterclass called Boardroom Mastery for promoters as to why boardrooms are important. How do you take the best decision making out of boardrooms? I mean, how boardrooms can become effective conflict management resolution. So those are the areas where we speak to a lot of promoters on that. Then again, as a platform as a service, so we have a lot of communities what we've created, because once you come to a seminar like this, you may be motivated for one day, but what about a continuous learning? What about continuously being able to be surrounded by like-minded people? That's where the communities come in very important. So we have communities for women directors, the womb circle, Lakshmi is a part of our womb circle, Namrata, who came today, was a part of our womb circle. So we have communities for promoters, independent directors, women directors, so on and so forth. Then again, placement, as I mentioned, we have 5,000 people ecosystem today who are people who are from across India. If you are looking for independent director for your company, the experience, the expertise, and we have a very scientific method of getting independent director for the board. Like recently, we helped a company from Bangalore, which is into cable manufacturing. So we got them a person who is into EV, right? The person understands what's future, and that's where I think the matchmaking happens with lot of interaction, lot of interviews, lot of personal meetings with the promoters and the independent directors. And one of the promoter wherein we help them to get 2 independent directors, the promoters very clearly said that we are 3 brother family, and we don't want our friends and family to be on our board, because they will be biased, they will not be challenging us, and we want experts and professionals to come on board and sit with us and kind of challenge us to make the best decisions which come out of our boardrooms. So these are the mindsets with the promoters with which we've been working, and we could see big transformation. The company came out of the IPO of 2,000 crore, and already today they are almost 7 or 8,000 crore is their market cap. So this is what we have been working on. Again, I'll not get into it, but yes, very important thing is that we have 5,000 people across. We do a lot of learning programs, online, offline interactions. We keep doing with promoters and the directors ecosystem overall. Collective wisdom, I think last 7 or 8 years, we've been working on building up this entire ecosystem. Finance Minister graced the occasion for us at Bombay Stock Exchange in 2022, where she launched a program for us. After that, also, we've been doing a lot of initiatives in association with exchanges, where we create, the corporate governance as the voice for India, that how India is changing and how the ecosystem and landscape of corporate governance has to change. So yeah, that's all about, this is the ecosystem, what we have been working upon.
We do a lot of partnerships and collaborations with ITM, is again one of the institutions where we have, already collaborated at Mumbai, but happy to collaborate at Raipur level, with you. So yeah, I mean, we have expert mentors. Any of the questions, we work on a boardroom conversation. So our experts can come and sit with the company's boardrooms, talk to them. What are the industry trends? How, the company's leadership is going to be, what's, going to be the valuation. So we do a lot of intense conversations with the boardrooms of the companies, and where the best, kind of strategies come out. So, a lot of strategists like Sridhar is there in our ecosystem, who sit with the companies, talk to the promoters, deep dive, handhold. That's something which comes in. So yeah, that's all about what we do at Mentor My Board. Happy to share a brief journey with all of you, and I'm sure the way today entire ecosystem for India is evolving. We all have huge responsibility collectively to make sure that more and more businesses come out, get listed, raise capital. I mean, recently I was talking, where Kamala Madam had invited me for a very exclusive roundtable conference at Bombay Stock Exchange, International Corporate Governance Network, ICGN. So CEO of ICGN and few other people from the global investors community, when they came, they spoke about how they are looking at India. The corporate governance is evolving, and I think that's where the collective a push is needed to show the world how India is evolving even on corporate governance. I think the more better governed companies we have, the better chance of attracting global capital to India starts happening there. I think with this, I would like to thank all of you to be here, and with this, we also formally close. So for closing, I would request Lakshmi to come, but from yeah, okay. Okay, yeah, please go ahead. No, go ahead. No, please. Okay, my bad, I didn't ask for the question, sorry. Yeah. We are having 4 partnerships. Okay. 2 are normal partnerships and 2 are LLPs. Okay. The case here is PAT is there in each and every firm. But in order to actually migrate the corporate structure from a partnership to a private limited or to a limited, there is a hindrance. RERA. Our projects are registered in RERA. We cannot actually allocate the promoter's share to any other third firm, nor we can actually migrate the land ownership of that project that are registered in RERA to another private limited, because that will be a very different entity in itself. So, is there any? Have you actually came across such a case, such a scenario, a case study, wherein a promoter who is has a partnership is registered under XYZ legal government authority, who does not permit to migrate the asset, migrate its stock, or in case what sir actually correctly said, migrate his or her stock in trade from that entity to a private limited. How you go forward? Because if I say that yes, in 5 years down the line when I complete the project, then also the revenue department of the state, it will not permit. It will say that you execute a sale agreement between your partnership and that private limited. Now the sale agreement execution takes under 10%, stamp duty and registration charge inclusive. For the 800 crore asset, it comes to 80-90 crores for the sale agreement itself. Have you came across? I'm not saying that this is a case which comes every day. Have you come across any such case study or any such scenario? I see. I practically not handled any real estate project as such where a lot of restructuring has happened. But I'll tell you, under the company law, there are enough of provisions where restructuring can happen. And when you do a restructure, so it takes actually 2 to 3 years time for you to plan it out properly. How it can happen? Definitely, we can deep dive, we can sit with you, look at that, and then how do you create the structure around it can be discussed and decided upon. Number one. Number two, yes, you're right, because different regulators govern the institution in different ways, and that's where the
multi-dimensional approach will be required. I mean, we will need to look at the taxation perspective. We will need to look at the RERA perspective. We will need to look at, the stamp duty perspective, because when, even if, there is a restructuring, the mergers and acquisitions, when they happen, there is a stamp duty over and above that. So it is a kind of a holistic approach we'll have to see at the transaction, and this also aligns to what you really want to do in future. So for example, if you say that, okay, down the line, 3 years or 5 years, I'm going to build a 10,000 empire. So 90 crore may not look, very difficult for you. But definitely it has to, kind of create a very structured way of going into it, because the moment you even a single wrong step can, number one, lead to the entire derailing the entire process, or even it can happen that some, unforeseen liabilities are popping up. So we'll have to kind of, structure this entire thing. So sit with your, consultants, deep dive, or maybe, kind of take 2 or 3 opinions also on that. And then you take that step, the cost involved in that taking legal opinion will be much lesser than, going into complications. So that would be my recommendation to you. Yeah. Any other question? Okay. Yeah, so thank you so much for this entire day. I'm sure we had, the very long day. But last but not the least, let me thank Dr. Lakshmi for making it possible to, host this entire program in Raipur. Deep gratitude to ITM Skill University Raipur for making it happen for us. Yeah. Thank you. Thank you very much. So I would like to thank all the participants, the ITM team, and people who joined online, offline for whatever time, for making this event happen. I would like to thank all the speakers, Mentor My Board, and for being here, supporting us in this initiative to bring this kind of sessions to Raipur. We look forward to many more such sessions in more formal settings and on a working day. Like a lot of them have been asking and sending message. So we'll do that. And thanks a lot. That's all I can say. Have a great day.